टिपिकल संडे मॉर्निंग बोगोटा निकल गया है साइकिल पे और हम निकल गए हैं ट्रैकिंग पे। एक्चुअली दिस इज़ अ बर्डिंग ट्रिप टू लागूना एल तबाकाल। So we are at 80 kilometers an hour and the cyclists are ahead of us. Laguna El Tabacal is a lagoon located 10 kilometers from the urban area of La Vega and about 2 hours from Bogotá. It is at 1250 meters above sea level. It's a beautiful lagoon whose main attractions are a floating island. Well, we didn't really see it floating, but that is what they say. The parking area is pretty good and very well organized. पक्षी तो नहीं दिखे अब तक, लेकिन मछलियाँ खूब दिख रही हैं। The breakfast is looking good. We are all happy. The lagoon was formerly inhabited by the Panches. They were the ones who called this Laguna de Tabacal due to the extensive tobacco crops that surrounded it. So funny, and they're all in the line. देखिए, गया। तो कॉर्मोरेंट्स और टॉर्टॉइस को हमने खूब ऑब्ज़र्व किया। बहुत ज़्यादा चिड़िया तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ, चिड़ियों ने हमें ज़रूर देखा। Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
जाना कहाँ है? तो बहुत ही घना जंगल, और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं थोड़े से ऊपर, जहाँ से हम लगून पूरा का पूरा देख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रैक, खासकर चिंगाजा और चिकाके के बाद तो ये बहुत ही आसान है। एलमोहन को एलमोहन पे जाना है। ये ट्रेल है मेरे ख्याल से। हाँ, एलमोहन के लिए 20 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, एलमोहन उधर है। और finally I saw hibiscus, normal hibiscus, Indian hibiscus. My God, tan grande. Rescue mission. Sendero el Pato Dorado. तो थोड़े से ग्रेप्स, कुछ कॉर्मोरेंट्स और ज़्यादातर टर्टल्स, और इनको देखकर हम लोगों ने खूब आनंद लिया। Oh, don't give up. Bosque de Monstera. Hay diferentes tipos de monstera. All in all, a super trip, and especially when you get to eat tikki chaat.